Good afternoon, children. Today we are here to discuss a new topic today, and the topic is human health and diseases. You can see here what is health. Health is the state of complete physical, mental, and social well-being. A healthy person must be physically, mentally, and socially fit. Next, health simply does not mean disease-free condition or physical fitness, right? Means it does not merely means disease-free state, but it may also include physically fit, mentally fit, as well as the person must be socially fit. Next, what are the factors which affect health? First one, genetic disorder. Genetic disorder, that is also known as congenital diseases, means those diseases which the person gets from their parents. So genetic disorder, the defect which child inherits from its parent. ठीक है? जो parents से disease from one generation to another generation आता है. Second, infection from microbes or other organisms. Means pathogens or microorganisms also affect physical fitness of an individual. And third one, lifestyle. Lifestyle of a particular person may also cause disease. It includes food and water, what type of food, whether it is contaminated or fresh. And so contaminated food and water, that also affect individuals' health, as well as exercise and rest. So these are the factors affecting disease. First one, genetic disorder, which inherited by an individual from its parents. Second, pathogens or microbes. And third, lifestyle of that person. Next. Good health can be maintained by following things. These are very simple. The chapter is very simple and easy. So if you pay attention, you will get more marks or good marks in examination. So good health can be maintained by, number one, balanced diet. The person who is eating balanced diet includes proper amount of carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. मतलब जितना required है वो ले लें. Second, personal hygiene. Personal hygiene includes cleanliness and hygienic condition of an individual. It may include cleanliness of an individual or its home and environment. Next, regular exercise. Fourth one, awareness about the disease and their effect. If anyone knows what are the things which may affect individuals' health, so by awareing themselves, they can also prevent disease. Next, immunization against the infectious diseases.
taking vaccines or drops, polio drops, etc. Yeah, different types of drops may prevent a child from disease. Next, proper disposal of waste materials. Waste materials, actually, these waste materials are the breeding house of vectors like mosquitoes, then flies, cockroach, etc. So, the waste material should be properly given there. Given there. इसे आप आगे पीछे की आगे हो गया। ये देखिए इसको चक्का घुमाइएगा So proper disposal of waste is also necessary. Then control of vectors. I told you that housefly, mosquitoes, cockroaches, and other organisms act as vector and they spread disease. Next, maintenance of hygienic and water. So, in this way, we can maintain our good health. Next, when we talk about disease, it can be divided into two types. First one is infectious diseases. In junior classes, you have also read this. Diseases which are easily transmitted from one person to another. जो एक और person से दूसरे person में फैलता है, they are known as infectious diseases. Example: common cold, malaria, tuberculosis, etc. Non-infectious diseases, diseases which cannot transmit from one person to another, name cancer, high blood pressure, yeah, hypertension, and diabetes. Next slide. The disease causing microorganisms like bacteria, viruses, fungus, protozoa, helminths are called pathogens. One by one, we will read about the types of diseases which may be causative agent, may be bacteria, virus, fungi, protozoa, helminths, है ना? So ये हम लोग one by one देखेंगे. The pathogens means microorganism can enter the body by various means and multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. Means if a person uh, gets affected with any disease, his or her physiological or morphological disturbance occurs in their body. Coming to next slide, इसको one by one देखेंगे. Number 1, typhoid. This one is caused by, ये causative agent क्या है? Typhoid, it is caused by Salmonella typhi. Cause कौन कर रहा है? Salmonella typhi, and it is bacterial disease. And it is confirmed by Vidal test. किससे confirm करते हैं? Vidal test. Symptoms:
हाई फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर, मतलब फीवर हमेशा रहता है, कभी भी एकदम खत्म नहीं हो सकता है. देन वीकनेस, stomach pain, and sometimes headache also. Symptoms है headache, high fever. High fever कैसा? Sustained. The person may feel weakness, and actually this bacteria affect stomach and intestine. That is why it may cause stomach pain. नीचे भी देख सकते हैं. Loss of appetite, ulcer, severe headache, dehydration, watery stool, high fever, skin rashes. So these are the symptoms caused by the disease typhoid. So हम लोग first disease में आए, that is bacterial disease, and the example is typhoid. Next. ये सारे symptoms हैं. चूंकि ये अभी just now I told you that this affect all these process, this disease, this bacteria affect human intestine. That is why it may cause abdominal pain, constipation, dehydration, watery stool, etc. Next आ जाते हैं. Again, निमोनिया टेस्ट अगर करते हैं तो एक्सरे से कर सकते हैं. निमोनिया अगर टेस्ट बोले तो एक्सरे से देखा जा सकता है. And the causative agent is Streptococcus pneumoniae. Pronunciation सही से करेंगे. Streptococcus pneumoniae और Haemophilus influenzae. ठीक है. Symptoms निमोनिया में fever, chills, cough, headache. Effect. This disease may affect alveoli, means the microorganisms invade the inner lining of respiratory organs and as well as alveoli, and large amount of mucus is created inside our respiratory system, and that is why alveoli gets filled with fluid. Fluid means thick sticky fluid known as mucus. ठीक है. Thick sticky white fluid known as mucus, and these alveoli gets filled leading to congestion. सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है in respiration. वही लिखा हुआ है, leading to severe problems in respiration. And in last case or in severe case, the oxygen becomes very less in the body, and the nails, the skin become blue in color. वो एकदम severe case है. Generally बच्चे इससे affected होते हैं, और यहाँ पे तुम देख सकते हो, you can see here these alveoli
which is supplied with blood vessels, lungs. Unit structure of lung is alveoli, and in this case, the alveoli gets filled with mucus or fluid, and it may cause congestion. ठीक है? Problem in respiration, problem in breathing, and in severe cases generally ये बच्चों में होता है ना? तो the nails, the skin become blue in color. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. कॉमन कोल्ड. यहां से हम लोग क्या आ गया? वायरल डिसीजेस. दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ वायरल डिजीज. एक मिनट. कॉमन कोल्ड. एग्जाम्पल क्या है? वायरल डिजीज. द फर्स्ट एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड. पॉजिटिव एजेंट राइनो वायरस. ठीक है? राइनो वायरस इज द पॉजिटिव एजेंट. सिम्टम्स, चूंकि ये वेरी सिंपल है, हम लोग सभी लोग वायरल डिजीज से अफेक्टेड होते हैं. नेजल कंजेशन, है ना? मतलब सांस लेने में दिक्कत, लगेगा कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं. नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज. सोर थ्रोट, मतलब यहाँ गला में दर्द. कफ एंड हेडेक. इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज. ठीक है? ये वायरल डिजीज है, कॉमन कोल्ड है, पॉजिटिव एजेंट राइनो वायरस, एंड द सिम्टम्स nasal congestion, discharge, sore throat, cough, headache और भी body pain भी. जो वायरल डिजीज, वायरल फीवर से हम लोग अफेक्टेड होते हैं. इट मे कॉज बॉडी पेन, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट मींस टॉन्सिल का बढ़ जाना, एंड nasal discharge और congestion. सारे टॉपिक्स काफी सिंपल है ना? नेक्स्ट, मलेरिया. अभी हम लोग जो टाइफाइड देखे प्लस निमोनिया, वो बैक्टीरियल था. कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज था, एंड मलेरिया the disease is classified under protozoan disease. Caused by protozoa Plasmodium vivax. यहाँ देख सकते हैं Plasmodium vivax, Plasmodium malarii, and Plasmodium falciparum. Plasmodium vivax, Plasmodium malarii, and Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum causes severe type of malaria. Symptoms: high fever,
चिल, है ना, ठंड लगता है बॉडी में, और हर थोड़े थोड़े देर में वो दिखता है। इफेक्ट किसको इफेक्ट करता है? लीवर को, ठीक है। Why? Because parasite multiply within liver. सबसे पहला टारगेट ऑर्गन है वो लीवर है, एंड देन अटैक आरबीसी। याद रखेंगे, फर्स्ट प्लाज्मोडियम अफेक्ट लीवर ऑफ अ पर्सन, इसीलिए लीवर भी उस समय डैमेज होता है एट द टाइम ऑफ मलेरिया, एंड देन फ्रॉम लीवर से फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलता है और किसको अफेक्ट करता है? आरबीसी। हियर यू कैन सी सम सिम्टम्स: हेडेक, ड्राई कफ, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, discomfort, high fever, enlarged spleen, and muscle and back pain. Now here you can see this one is normal cell, है ना? Normal cell है. Normal RBC है. Normal red blood cell. It is biconcave in structure. मतलब बीच से ऐसे मोटा और बीच में चारों तरफ से मोटा और बीच में ऐसे सप्रेस, उस तरह का. एंड व्हेन दिस मलेरिया इन्फेक्ट्स बाय मल्टीपल फीजन, है ना, किस तरह से ये लोग मल्टीप्लाई करते हैं? By multiple reason, है ना, means when an organism enter inside the cell, it divides, redivides. कौन डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा? फर्स्ट न्यूक्लियस, है ना, जो ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस है, इट डिवाइड्स, रीडिवाइड्स, यहाँ तुम देख सकते हो, एंड all nuclei encircled with cytoplasm. इस तरह से ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनसाइड द आरबीसी, जिसको बोलते हैं मल्टीपल फीजन. When large number of organism appears inside the RBC, ये RBC है, it gets ruptured, ये rupture हो जाता है, releasing large amount of microorganism at one time. फिर से बता रहे हैं, this plasmodium vivax, it is a protozoa, ठीक है, जो अमीबा पैरामीशियम पढ़ते हैं उसी ग्रुप में है ये, बट ये पैथोजेन है. It first affects our liver. From liver it migrates into RBC. ये normal RBC है, normal cell किसका? RBC, normal RBC. फिर when plasmodium enter inside it, its nucleus divides, redivides, forming a large number of nuclei, and each nuclei get encircled with a small amount of cytoplasm and cell membrane. When large number of microorganisms appear in RBC, it gets ruptured, मतलब टूट जाता है, releasing many microorganisms at a time, and each microorganism again, है ना, ये each microorganism again target one another RBC, and when rupture of the RBC get ruptured,
RBC get ruptured and it may cause poisonous chemical known as hemozoid. ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि the ruptured RBC may release a poisonous chemical inside our body known as hemozoid, which is responsible for high fever, shivering and chill. बात समझ में आ रही है सभी को? Coming to next slide. Next, amoebiasis or amoebic dysentery. देख सकते हैं amoebiasis और amoebic dysentery. Positive agent Entamoeba histolytica. This Entamoeba histolytica is again a protozoa. ये क्या है? Protozoa. So amoebiasis or amoebic dysentery is also an example of protozoan disease. Causative agent याद रखेंगे Entamoeba histolytica. Symptoms: constipation, abdominal pain, abdomen, body का निचला हिस्सा, then cramps, stool with mucus and blood clot, infect large intestine. Next, ascariasis. Ascariasis. Caused by worms. ये देख सकते हैं, this one is the diagram of round worm. राउंड फॉर्म, जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, एस्कैरियास. ठीक है, एंड द डिजीज कॉज्ड बाय, यहाँ पर है हेलमिन. सिम्टम्स: इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर एंड लॉस ऑफ आरबीसी, दैट इज एनीमिया. सिम्टम्स वगैरह को याद करना होगा. नेक्स्ट अगेन द डिजीज कॉज्ड बाय वर्म्स, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस. इसका कॉजेटिव एजेंट है उच्चेरिया डोनोवेनाई. बोलते हैं उच्चेरिया
लिखते हैं उच्चेरेरिया, तो बोलेंगे उच्चेरिया, लेकिन लिखने के समय क्या प्रोनाउंस करोगे? उच्चेरेरिया। ठीक है। Caused by, again, helminths or bombs. पॉजिटिव एजेंट ध्यान दोगे, उच्चेरिया लिखते हैं, बट वी प्रोनाउंस उच्चेरिया, बैंक्रॉप्टाई, उच्चेरिया, symptoms, inflammation, inflammation मतलब swelling, swelling in the lower limbs and genital organs, effect lymphatic vessels, जैसे blood हमारे body में फ्लो करता है उसी तरह से lymph भी है, तो lymphatic vessels of lower limbs get blocked, है ना, और इससे क्या होता है? swelling दिखता है। देख सकते हो डायग्राम में कि किस तरह से पैर में सूजन है और पॉजिटिव एजेंट है अ टाइप ऑफ हेलमेट, उच्चेरिया बैंकॉप्टाई, उच्चेरिया मलाई। नेक्स्ट, ringworms. Coming to ringworm, it is a fungal disease. Positive agent, positive agent